जय हिंद सर। Good afternoon, sir. Jai Hind. जय हिंद सर, गुड आफ्टरनून। Sir, you are on mute. Yes, so good afternoon, everybody. Jai Hind, Good afternoon. yes. Good afternoon sir, Jai Hind sir. Yes, Jai Hind, Sumit, Harsh, Narinder, and Jatin Gupta. Yeah, Jatin Gupta, I'm not recalling, last association kahan pe tha? Good evening, sir. Yes sir. So when did we interact earlier? No sir. Yes, Anshu, Jai Hind. Good evening, sir. Good evening, Anshu. Ashish, how are you? I'm good, sir. Good afternoon. Okay. Okay. I think there was some echo, right? So, Harsh, what's happening? Sir, nothing right now. Just last week joined the company, and right now I'm traveling, so nothing much. Achha. Okay. So, where is the office, in Gurgaon or somewhere else? No, it's in Noida. So, but Noida. right now it's work from home. It's a work from home. Okay. Yeah. Okay. Good. Right. And Jatin, just tell me something about yourself. What entry is it? Are you going for the first? Sir, I'm for NCC special entry and also CDSE, CDS. CDS. So NCC special entry का हो गया तुम्हारा? नहीं sir. This time you didn't appear, is it? You were not eligible or you did not appear? नहीं सर, एलिजिबल है, मतलब आपकी जो एंट्री आएगा उसमें जहाँ पे नॉलेज की इतनी खास जरूरत नहीं होती है, राइट? जहाँ पे इट इज ऑल अबाउट योर इन्वॉल्वमेंट, इट इज ऑल अबाउट योर एक्शन. यस सर. अगर आप कोई खेल खेल रहे हो तो वहां पे बहुत ज्यादा नॉलेज की जरूरत नहीं है, लेकिन कितने जुनून के साथ आप खेल रहे हो, दैट इज इम्पोर्टेंट, राइट? कितना आपने प्रैक्टिस करी है वो इम्पोर्टेंट है. Yes. So you realize that. So it is not only about knowledge. Knowledge is one part, right? Rest is, like I said, the first question which I said कि आपको आपके लिए कितना जरूरी है, तो आप उतनी मेहनत तभी करते हो. अदरवाइज आप सोचते हो कि चलो इतना तो चल जाएगा, आज इतना काम कर लिया बहुत है, right? Yes, so yeah, you cannot have things like कि knowledge नहीं है इसलिए मेरा confidence नहीं है. Confidence, knowledge is one of the components which helps improve your confidence, right? Practice, sincerity, hard work, determination, all these things, they also help to a great extent.
how confident you are. ठीक है. So anyway, just you need to recalibrate कि आपको क्या क्या कहाँ improve करने की जरूरत है. Yes, Harsh is traveling. I am not sure whether he's around. Ashish Pawar. Yes, sir, I'm here. अच्छा, okay. Harsh, yeah, तुम बताओ अभी, you've been in it, out of it. So what is the most important area where you have identified where you need to work? Sir, for me, Sir, नहीं, आशीष, just hold on. हर्ष से बात कर रहा हूँ. okay, sir, sure. sir, from the last experience, I would say consistency and the way you are putting up your point, it is very important. So just working on that so that I can better, like I can prove that on the next SSB. Okay. So maybe I'll just come back to this slide, right? So एक communication है इसमें, what would help people is learning to express yourself any which way, right? आप बोलने का एक हम बोलते हैं जब expressing yourself हम बात करते हैं, we generally tend to understand that it is about speaking, right? Or about writing, but it is, you express yourself in many ways. तो पहले हमारे जो दिमाग में जो भी चीजें होती हैं उसको अगर आपने एक्सप्रेस करना है, उसका माध्यम कुछ भी हो सकता है, राइट? कविता से आप कर सकते हो, गानों से कर सकते हो, ड्राइंग से कर सकते हो, प्ले से कर सकते हो, मीम्स बना के कर सकते हो, कैसे भी कर सकते हो, राइट? सो एक वो चीज, वो जो झिझक है, वो पहले आपको दूर करनी है कि अपने को कैसे आप हेजिटेशन दूर करो, राइट? लोग क्या कहेंगे, वो चीज नहीं आनी चाहिए, राइट? सो these days there are plenty of what do you call, mediums through which you can express yourself, and one must exercise that. Social media है आपके पास में, WhatsApp है, Instagram है, right? There are so many things that you can use, so many mediums you can use them, right? और जैसे जैसे आप करोगे आपको लगेगा you are able to now express yourself more freely. और यही चीज जो आपको जब आप पब्लिक में आप बोलते हो, ये चीज आपको परेशान करती है, राइट? सो दिस इज वन area where I think you need to work on, right? इसमें आप काम कर सकते हो. स्पोकन इंग्लिश, ऑब्वियसली जब स्पोकन इंग्लिश की बात कर रहे हैं, so I think about 70% of the candidates, I'm telling from the experience, 7, right? लेकिन आज की डेट में इंटरनेट है, you have social media, you have so many platforms, right? You have so many news channels, so many Netflix और पता नहीं कितने कितने आपके पास में इंटरनेट सर्विसेज आर अवेलेबल. सो उनमें से आप प्रोग्राम्स ढूंढो, और प्रोग्राम्स कौन से ढूंढो, जैसे बोलते हैं ना दैट एक पन दो काज, हाँ? और सो वहां पे आप अपना करंट अफेयर्स का कोई प्रोग्राम देख सकते हो, कोई एंटरटेनमेंट के लिए आप मूवी देख सकते हो या कोई शोज देख सकते हो. हाउ मेनी पीपल हैव सीन दैट रॉकेट बॉयज? किस किसने देखी है, या किस किसने ये सीरियल मैंने देखा सर. देखा है? सर ऑक्टोबर स्काई. हाँ, ऑक्टोबर स्काई सर, जो एक कोलवुड पे जो था उसके ऊपर है, मैंने देखी है. मैं उसको फॉलो भी करता हूँ. Yeah, okay. So the point I am trying to make is to be one of the topmost in demand and very respected channel, right? And वो ज़्यादा फालतू बात नहीं करते हैं, but जो भी है, it's a very good channel, very good news of source of news and current affairs, right? So वो चीज़ आप देख सकते हो. आप if you're looking beyond the news and current affairs, you're looking for movies, by all means watch movies, watch your Korean shows are there, subtitles में सारी चीजें available हैं, आप उनको देखो, right? आपका entertainment recreation हो रहा है, वो भी जरूरी है, और साथ साथ में आपको इंग्लिश का समझ में आ रही है, इंग्लिश समझ में आ रही है, because
like I said, about 70% of the people are finding difficult in spoken English. Anand, your mic is off. Your mic is off. Mic is not working. Okay. So Ashish, what are you doing? As far as how much time are you devoting for towards current affairs and reading something on this? Sir, like in the every morning, I at least give about 30 minutes for reading the newspaper. And on YouTube, sir, like whenever I find time, so I watch the current affairs on YouTube. So these are like the two methods through which I keep myself updated. Yeah. Okay. So that is extremely important, right? So this should be a part of your daily routine, everybody, right? Yes. And then revising certain things. एक है करंट अफेयर्स पढ़ना, ठीक है, न्यूज पढ़ना एक चीज है, और जो भी आप पढ़ रहे हो उसको एनालाइज करना, प्रोसेसिंग इंफॉर्मेशन, राइट? Important is not what you are reading. Important is how you process this information that you have got from here, right? Now, general knowledge, current affairs, military service knowledge, आप देख रहे हो कि okay, रशिया में क्या हो रहा है, यूक्रेन में क्या हो रहा है. Now, you should be able to process this information, right? And reason out. आपका क्या मत है इसमें, right? Find out what are the important things. Right, so these are the things. I don't know if somebody has attended those special classes on Unacademy. I have taken some special classes on group planning exercise. तो उसमें मैं आपको ये नहीं बता रहा हूँ कि ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज, पर्टिकुलर एक्सरसाइज आप किस तरह से सॉल्व करोगे. आई एम जस्ट टेलिंग यू कि आप अपना मसल बिल्डिंग करो, राइट? आप अवेयरनेस अपनी बढ़ाओ. क्या आपको अगर रास्ते में जा रहे हो और आपको एक आपका अगर पंक्चर हो गया है या फिर आपको तकलीफ हो गई है कोई, तो आपको कहाँ पे मदद मिल सकती है, राइट? सो दैट यू नीड टू वर्क. आप यू आर गोइंग इन रूट. ओके, हर्ष इज ट्रैवलिंग, लेट अस से. ओके, एंड हर्ष वांट्स सम हेल्प. वेयर डू यू गेट इट, हर्ष? यस सर. अभी तुम ट्रैवल कहाँ से कहाँ कर रहे हो? Sir, just going to my aunt's place right now from my home. Yeah, correct. So मान लो अगर किसी ऐसी जगह में जा रहे हो जहाँ पे बहुत ज्यादा आबादी नहीं है, कुछ नहीं है, और वहाँ पे आपको किसी चीज की जरूरत पड़ती है, राइट? सो देयर इज व्हाट आर द प्लेसेस जो आपको जहाँ पे आपको मदद मिल सकती है. सपोज मेडिकल हेल्प की जरूरत है एंड इट इज खाली एक सुनसान जगह है, तो कहाँ उम्मीद कर सकते हो आपको कुछ मदद मिल सकती है? फोन नॉट वर्किंग. If my phone is not working, sir, obviously I would be asking people for some local help, because they would be knowing some shops or some places which could give me the help which I'm looking for. For example, in a new area, I might not be aware where is the chemist shop. So the other person who is the local there, they would be definitely aware that where I can get the proper help. करेक्ट. सो आपको अपने को अप्लाई करना पड़ेगा, राइट? यू हैव टू फाइंड आउट और रादर यू हैव टू थिंक अबाउट इट, राइट? सो अगर आप ये नॉर्मल जिस व्हाट आई कॉल मसल बिल्डिंग इज ट्राइंग टू बी अवेयर ऑफ वेयर यू कैन गेट डिफरेंट काइंड ऑफ हेल्प, या कहाँ पे आपको रिसोर्सेज मिल सकते हैं, किस जगह से आपको किस तरह के रिसोर्सेज मिल सकते हैं, राइट? सो इन दिस ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज वाला जो मैंने 2 स्पेशल क्लास ली थी कल और आज, सो आई हैव फोकस नॉट ऑन द सोल्यूशन ऑफ कि वो प्लान आपको जो स्टोरी वहां पे दी गई थी उसमें क्या प्रॉब्लम्स थी, उसको सॉल्व करने के लिए आपके पास में किस तरह के रिसोर्सेज आप ढूंढ सकते हो. कोई स्कूल आपके पास में, स्कूल में आपको क्या क्या मदद मिल सकती है,
अगर ढाबा आपके रास्ते में आ रहा है, ऑब्वियसली आप सड़क में जा रहे हो, कोई ना कोई ढाबा इस तरह का आपको मिल सकता है, राइट? कोई आप जंगल में जा रहे हो, वहाँ पे फॉरेस्ट गार्ड आपको मिल सकता है, फॉरेस्ट गार्ड का रेस्ट हाउस हो सकता है, गार्ड रूम हो सकता है। Yes, sir. सो देयर कैन बी पेट्रोल पंप आपको हो सकता है। तो यहाँ पे आपको मदद मिल सकती है कि नहीं मिल सकती? करेक्ट। अंशु मिश्रा, यस अंशु। यस सर। यस, तो आपको पेट्रोल पंप से क्या क्या मदद मिल सकती है? सर पेट्रोल पंप से अगर देखा जाए तो वहाँ सर कोई वैन या कोई मेडिकल अगर कोई हेल्प चाहिए, फर्स्ट एड या कुछ ऐसा, तो वो मिल सकता है सर। और क्या मिल सकता है सर? वहाँ से टेलीफोन डायरेक्टरी या कुछ ऐसा भी मिल सकता है, जो आसपास की पुलिस स्टेशन या हॉस्पिटल, वहाँ से कांटेक्ट। एग्जैक्टली। सो वहाँ पे आपको पंक्चर शॉप मिल सकती है, वहाँ पे आपको कम्युनिकेशन मिल सकता है, वहाँ पे सम काइंड ऑफ मैन पावर इज देयर, राइट? Some contact of important places, these are available there. Landline phone number normally होता है वहाँ पे, right? And so one has to think about these possibilities. और जब ये चीज आप अगर पहले से ध्यान रखोगे तो आपको, अगर आप let us say you are doing this group planning exercise, वहाँ पे इस तरह की चीजें बहुत आती हैं, या आप बीमार, आप कोई एक्सीडेंट किसी का हो गया, तो आप उसके कैसे क्या मदद कर सकते हो, राइट? व्हाट ऑल आर द इमीडिएट एक्शंस दैट यू नीड टू टेक? सो यू गॉट टू वर्क ऑन दीज थिंग्स, राइट? सो इसमें ये जो चीजें हैं, इस तरह की सिचुएशंस को आप पहले देखो कि ऐसे अगर परिस्थिति हुई तो आप क्या क्या कर सकते हो, राइट? कहाँ से रिसोर्सेज लेके आ सकते हो? सो वर्क ऑन दीज एंड ऑब्वियसली यू विल बी एबल टू। होता क्या, it's not that you don't know about these things. Most of you know about these things, but वो आपको उस टाइम पे ध्यान नहीं आती। Am I right? Yes sir. हाँ, तो इन चीजों को आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करो, राइट? जैसे बोलते हैं ना, that warming up before the match. So this is what I think we should do. Okay, so इस तरह के वो करो। न्यूज है, न्यूज को आप एनालाइज करो, कोई इशू है उसको एनालाइज करो, राइट? गेट इनटू द हैबिट ऑफ दैट। दैट इज व्हाट इज गोइंग टू हेल्प यू। रीजनिंग, एनालाइजिंग, राइट? अवेयरनेस आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। देन यू आल्सो नीड टू बी फिट, बोथ माइंड एंड बॉडी। फिटनेस इज मोर अबाउट माइंड एंड बॉडी की फिटनेस हो जाती है, राइट? आप थोड़ा सा मेहनत कर सकते हो, लेकिन इट इज मोर इम्पॉर्टेंट टू कीप योर माइंड हेल्दी, राइट? सो माइंड हेल्दी कैसे रख सकते हो? यस, नरेंद्र शर्मा, जतिन गुप्ता, टेल मी, हाउ डू यू कीप योर माइंड अजाइल एंड फिट? सर सुबह सुबह उठ के जो मतलब बोलते हैं ना कि जो ओस होता है घास में, उसमें चलने से माइंड वगैरह फ्रेश रहता है। फिर जाके मतलब कुछ मोटिवेशन स्पीच देख लेंगे यूट्यूब वगैरह में, तो माइंड फ्रेश रहता है। और भी बहुत सारी चीजें सर। यस, मोटिवेशन से रहता है, आप योगा करते हो उससे रहता है, राइट? थोड़ा सा दैट्स थिंक ऑफ पॉजिटिव थिंग्स, थिंक ऑफ गुड थिंग्स, राइट? जो मैं अक्सर बताता हूँ कि आपको पॉजिटिव चीज ढूंढनी है एनवायरमेंट में, इन योर डे टू डे, राइट? आशीष पवार इज डूइंग दिस वेरी रेगुलरली, वेरी कंसिस्टेंटली, राइट? And I'm sure that is helped, isn't it, Ashish? How much of help that has given you? Yes, indeed, sir. Like every day, whenever I start reading newspaper, so earlier I used to just start reading any news, but now, sir, I particularly focus on what is good in the entire newspaper. I said this not only help in the reading newspaper, but what happens in every day. So I try to find out what is actually happening good in our environment, sir. So Exactly. that has helped me. So yeah, and it is not only about the news; it is also about the events that are taking place. It's not only about the newspaper or जो official या
सोशल मीडिया में आता है, इट इज ऑल्सो व्हाट इज हैपनिंग अराउंड यू. अगर आप कहीं काम कर रहे हो, आपके जो वर्क एनवायरनमेंट है वहां पे क्या हो रहा है, right? There also, there are so many good things that happen, and if you focus on this, it keeps your mind healthy, right? अगर आप परेशानियों से जूझ रहे हो, आप सारी ऊट पटांग चीजें न्यूज पढ़ रहे हो, तो ऑब्वियसली आपके दिमाग में भी उसका असर पड़ेगा, isn't it? So I'm not saying that you need to totally blank off your mind from reality. No, that is not the point. The point is that you don't allow unnecessarily negative things to affect your mind, right? आपका अगर माइंड सही है, सही दिशा में चल रहा है, पॉजिटिव है, अनड्यूली चिंता नहीं कर रहे हो, राइट? बहुत ज्यादा चिंता करके भी कोई फायदा नहीं है, राइट? चिंता चिता समान, राइट? सो उससे भी आपको परेशानी होती है. Rather than doing something like that, it is better to get into some kind of a एक्टिविटी, राइट? आप एक्टिविटी करना शुरू करो, चिंता अपने आप दूर होगी. चिंता तब ज्यादा होती है जब आप खाली होते हो. Am I right? Yes, sir. Isn't it? So जब आप खाली होते हैं तब चिंता ज्यादा होती है. So long as you are working, आप अगर कहीं आप let us say you are waiting for a transport or waiting for a bus or something, ठीक है? So वहां पे क्या होता है कि you keep worrying कि पता नहीं अब कितना देर में आएगी बस या कोई भी गाड़ी, आप कितने देर में आएगी. अगर उस टाइम पे आप वहां से चलना शुरू कर दो, राइट? तो अगर कुछ आएगा रास्ते में तो आप उसको बोर्ड कर सकते हो, लेकिन अगर आप वहीं खड़े रहोगे तो आपको चिंता होती रहेगी, अनलेस अंटिल you know for sure कि इतने बजे यहाँ पे बस आने वाली है और आपको 10 मिनट वेट करना है. But if you are not sure of this, then it is better that you move on. Okay, at least I follow this. I've experienced this personally, and I don't wait unnecessarily at any point of time, right? Unless until like I said, I know that okay, 5 minute में 10-15 minute में I'm going to get another whatever vehicle or something. Otherwise, start walking, right? So that it's very important to keep your mind healthy, right? Yes, Ravi Yadav, how are you? Good, sir. तो कैसा रहा एक्सपीरियंस? आई थिंक it was you had a good. कहाँ इलाहाबाद गए थे तुम? भोपाल, sir. भोपाल. Okay, very nice. So how was the experience overall? Experience was very good. The stay was good, and satisfaction level was also good. But I was not that much satisfied with my performance because I was not able to express the way I wanted to express. So this thing I will improve in the next attempt. Chalo, I'm sure that will happen. When is the next attempt? Sir, I don't know clearly, but maybe in May or June. Okay. FCAT का दिया था तुमने इस बार? Yes, sir, I have given. Okay, fine. Yes. Okay, so basically what I was saying is, इन चीजों का आप ध्यान रखो. All these things, right? The focus area आपका जो है, most essential areas of focus, पहले decide करो कि आपके लिए कितना जरूरी है, right? To reach where you want to reach, right? Then knowing yourself, okay, I think there is a lot of demand for this, discover and develop yourself. So a short course on this I will be coming out with very shortly, right? Stay tuned to this channel, right? And we will do this. And in case, of course, you want personal interaction, of course, that will have to be a paid thing. But anyway, we will work that out. Okay. At least the basic course I'm going to launch here. Communication, like expressing yourself, try and do this. Spoken English, I think the lesser said, no amount of emphasis is good enough for this, right? So work on this. Developing good habits, रूटीन. तो सारी चीजें जो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, आपका कम्युनिकेशन के लिए इम्प्रूव करना, आपका फिटनेस, अवेयरनेस लेवल, जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, एंड सम टाइम फॉर एनालाइजिंग सर्टेन थिंग्स, राइट? ये आप अपने रूटीन में बनाओ. एंड
physical fitness also, right? So सही जिसे मैं बोलता हूँ ना, आपका मेंटल ओरिएंटेशन बहुत पॉजिटिव होना चाहिए. अगर वो पॉजिटिव है, everything will fall in place. It will not pinch you unnecessarily. Okay. Yes, now I am throwing it open for any questions that you people might have. Any kind of question, you're welcome. Sir, how to improve our clarity of mind? Because this is the thing which I observed, that this was the thing which I was lacking in this attempt. How to improve it? Clarity of mind. मतलब कोई will you give some context? किस बात में, किस संदर्भ में बात कर रहे हो? Like sir, if in interview, in a personal interview, some question was asked, then I was answering that question, but at the same simultaneously I was thinking that, oh, this answer is right or not. So I should say something else. Or if I have said something, then I was repeating, no sir, actually, again I was giving another answer. So once or twice this happened. ये आपको ये डाउट क्यों हो रहा है? किस like what is the context? Is it in context of general knowledge, current affairs, or is it in context of your own life? Own life, sir. Like in conference, I already told you, sir, he asked me what were you thinking while you were sitting outside. I said sir, I was thinking nothing. I did not know why I said this thing, but later on, then again he asked what you were thinking. He asked me, were you blank? Then I said, no sir, not exactly blank. I was waiting for my turn to come to conference hall and answer whatever question is asked. Then again he said okay. Then now he asked me, what were you thinking while you were sitting in the waiting area? So then again I said something. So this happened, sir. So देखो, ये तो थोड़ा सा तुम्हारे साथ में ये इशू है थोड़ा सा, because you are on the spur of the moment, आप कुछ भी बोल देते हो, right? Without really thinking much. It's not that you are overthinking, but you don't think much before you speak, right? तो थोड़ा सा संभल के बोलो and see, तोल मोल के बोल जिसे बोलते हैं ना. Yes sir. थोड़ा सा, I think that you need to work on that. But sir, GTU told me this one day before conference, that you think before you speak in conference and speak confidently. But still I was not able to do it. तो कोई बात नहीं, अभी उसको धीरे धीरे थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट होएगा. So there has been some improvement. I'm sure Harsh will vouch for this. But yes, I think like I said in the beginning, Rome was not built in a day. Yes sir. Yes sir. When he was telling me about his experience, I told him the same thing, that you have improved a lot. Yes. And maybe in the next SSB you might recommend, because if they have asked you so many questions, maybe you are a borderline case. Yes. No, he was close. He would have been close. But it doesn't matter. Ravi, अभी आगे देखो आप, ठीक है? Go with. Yes sir, I'm looking forward only. Yes, look forward to it, and things will get better. Things will get better, right? Chalo, anybody else? Anything? Any doubts? Any area? No, sir. Who is this? Who's that? Ushashi Chattopadhyay. Yes, sir. Okay, I didn't know when you joined. So what SSB are you going for? Yes, sir. I am a student of 21 Bengal NCC group, Belur Moth. NCC group, okay. Right. So you're going for the NCC entry? Yes, sir. Anything else? I am not graduate now. I am graduated for June. Then I appear from SSC. You will graduate in June? Yes, sir. Okay. Right. So कोई written exam भी दिया है तुमने? No, sir. अभी तक कुछ भी नहीं दिया है. अभी बीटेक मेरा कंप्लीट होगा जून में. तो उसके बाद अपीयर करेंगे एग्जाम में. चलो, okay. So just stay connected and yeah. Anybody else? Sir, yes, sir. Good afternoon, sir. हाँ, आशीष बोलो. Yes, sir. Sir, I have a question. Like, sir, how to become more expressive?
Now, sir, you asked like, do you have any question? So I was having question, but sir, like I was keep waiting. Ki, should I ask this question or not? Sir, how can I overcome this? Like, I think I am facing the problem with it. नहीं, अगेन द सेम थिंग, लाइक नो रवि का जैसे हम बात कर रहे हैं, सो हैविंग सीन यू आल्सो इन द आइकॉनिक, करेक्ट? सो तुम्हारे में भी बहुत झिझक बहुत है, राइट? हेजिटेशन बहुत है तुम्हारे में. Yeah, I believe so. Isn't it? So you know that will go धीरे धीरे जाते जाते जाएगी वो. You know it will not happen all of a sudden. Okay, but only thing, you know, you should not worry about what people will think. Okay. Yes. So there are times where, you know, you can very easily ask. एक होता है comfort zone में और एक होता है कि no, you are out of your comfort zone. अब पहला अगर आपका जो टेस्ट है वो है comfort zone में, right? So you are comfortable, you know, conveying your ideas with me, isn't it? So there should not be any problem here. But अगर yes मेरी जगह कोई और है, अनजान व्यक्ति है जिससे आप interact नहीं कर पाए हो पहले, that will be a little difficult. But comfort zone में तो I don't think there should be any problem, right? No, you should not think twice. हाँ, yes. Okay, वो इसीलिए मैं तुम्हें बोल रहा हूँ कि you know जितना एक्शन आप ले सकते हो उतना करो. Yes. Sir, basically my question was about psych test. Sir, for example, we are writing some story. Sir, how we know that, like how can we analyze that story that we are writing is a good or is it not practical or something? Like so whatever story I write, I think it is good story. Or sometimes I feel whatever story continuously I'm writing, they are not up to the mark, sir. Yeah, suppose when you say it is not practical or not, अगर वो चीज आप dispassionately देखोगे तो आपको पता लग जाएगा कि practical है कि नहीं है, right? When the heat of the moment, when you are writing, you know, 12 stories at a time, तब हो सकता है आपको पता न लगे, लेकिन जब आप उसके बाद में उसको देखते हो, can you not make out whether it is practical or not? लिखते वक्त हो सकता है, लिखते वक्त मान सकता हूं मैं, लेकिन आप उसको जब रिव्यू कर रहे हो तब तो आपको पता लग जाना चाहिए. Yes, correct, sir. And then you can make amends, right? Right, sir. So practicality की जहां तक बात है वो तो आपको पता लग जाएगी. Now at relatability की बात जहां आती है, एक आप किस तरह से आपसे वो रिलेट हो सकती है चीज. So उसके लिए हम DDY में हम बात करते हैं कि ठीक है आपके लाइफ में बहुत सारी अचीवमेंट्स हैं, चैलेंजेस हैं, राइट? सो उनको जब आप देखते हो कहीं ना कहीं ये चीज मुझसे कनेक्ट हो सकती है. Isn't it? Plus, you know, there are so many things that you may not have been actually, you know, have done it, but you have read about it. वहां से भी कनेक्ट हो सकती है. एसोसिएशन आपका वहीं पे होता है. Now आप the question is कि आप कहाँ पे फोकस करते हो, राइट? जहाँ पे आपको फोकस रहेगा, चाहे आप you know like अभी न्यूज़पेपर की बात हम कर रहे हैं, न्यूज़पेपर में you said you know you are trying to focus on those positive stories, right? So this is a very conscious decision. So this will ultimately you know help you in you know trying to recall and focus on the good things or good experiences, good stories that you may have read about, etc., etc. Right? So ये I cannot say that no कि आपके subconscious में जो भी है वो सारी चीजें अच्छी ही हैं. किसी के पास में ऐसा नहीं है, कोई you know दूध का धुला कोई भी नहीं है कि जिसके पास में सारे अच्छे एक्सपीरियंस हो, सारी अच्छी वैल्यूज हो. गुड बैड अगली सभी के पास में, राइट? It depends on how you associate with, how much, what kind of things you associate more with. And when it comes to writing your TAT stories, we are also looking at कि आप कितना imaginative हो, आप कितना मेहनती हो, right? आपकी किस तरह की वैल्यूज हैं, वो सारी चीजें आपके डिफरेंट कैरेक्टर्स के थ्रू निकल के आती हैं वहां पे. Okay, so to be able to you know totally do things
which are against your grain may not be possible. अगर हम सोचें कि भाई हमने वो बोलते हैं ना क्या 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली, सुना है वो? हाँ सर, सुना है ना? तो ऐसे हो सकता है। तो अगर आप 100 चूहे खाओगे तब तो फिर कुछ ना कुछ तो पता लगेगा ना। यस सर। या सो अगर खाली अच्छी स्टोरीज बना के सब लोग सिलेक्ट हो जाते तो आई थिंक इतना कोचिंग करने के बाद में तो बहुत सारे लोग सिलेक्ट हो जाते। So it has to, that the change has to come from in your thinking. It has to come in your behavior, right? तभी हम बोल रहे हैं कि Rome was not built in a day. For some people, it might take a little while. हो सकता है कई लोग उसमें already 70% तक already पहुंचे हुए हों, कुछ लोग 10% तक हैं, right? जो 10% है उनको 90% improvement करना है, जो 70% पे already हैं. Let us say, people, they are very clear, they are positively inclined, they have worked hard, they have focused on the right things, right? Physically, mentally, they are fine, communication is good. They might have to work maybe just 20-30%. Some people may have to focus more on their communication. Some people have to focus more on their confidence. Some people have to focus on their way of thinking. Some people, get so over confused with watching, the YouTube videos, etc., that उनके लिए वही एक सबसे बड़ा challenge है, कि उससे कैसे बाहर निकले. In fact, there are 2 students who are, जिनका काफी बुरा हाल हो रखा है. Otherwise, potential-wise, they are good. They are so utterly confused because of the various conflicting YouTube channels that they have been watching. तो उनके conceptions जो हैं, I would say they've developed a lot of misconceptions, right? So these are the challenges, right? So it might take a little while for you to get back on the track, right? Or get onto the right track. ठीक है, समझ रहे हो आशीष? Yes sir, got it sir. Thank you. Yeah. So in your case, तो तुम्हारा जो confidence का जो hesitation वाला है, I think that barrier has to go. अभी तक ये पूरा गया नहीं है. You are improving definitely on a lot of counts. You have improved a lot, but that confidence, that hesitation has still not gone fully. Yes sir. So I'm working on it. Like even in my workplace, sir, like I try to express myself, improving on that aspect as well. Not only try to express yourself, take initiative. Volunteer for certain things. Volunteer for carrying out certain, new projects or things like that. Right? कोई अगर total एक बोलो कि एक function organize करते हैं, let us meet outside. Right? तो उससे आपका थोड़ा सा ढेर बढ़ेगा. Okay, it doesn't have to be everything official. You can always volunteer. You can get your आप friends के साथ में किसी outing में जा सकते हो, कुछ कर सकते हो, घूम फिर के आ सकते हो, right? So take those kind of initiatives. So that is what is going to build your confidence. Okay, it doesn't have to be only आप TAT की story में confidence बढ़ा रहे हो, real life में आप बढ़ाओ उसको, ठीक है? Yes, sure sir. Yes. Thank you. And anybody else? Any points? Any doubts? So, yes, sir, I'm having one doubt. Sir, when we are writing a PPT, when we are perceiving the picture, sir, if our perception is good and we have written a very good story, sir, is it any sir कि कोई अच्छा impact पड़ सकता है जब हम एक अच्छी सी narration कर दें? ये तो अगर सूरज निकल रहा है सर्दी में तो अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है कि नहीं? हाँ, यस सर, सूरज, यस सर. हाँ, तो सर्दी में तो सूरज की बहुत जरूरत होती है ना? यस सर. तो अगर वो 15 लोगों में 18 लोगों में एक अच्छी कोई स्टोरी बना के नरेशन कर दे, इट इज अगेन लाइक समथिंग द सन इन द विंटर्स. यस सर. ओके, तो अच्छा इम्पैक्ट तो पड़ेगा ही. नाउ खाली वहां तक सीमित नहीं है, उसके बाद में डिस्कशन है. दैट इज द चैलेंजिंग स्टेज.
यस सर, अगर सर जैसे जीडी में अगर कोई पार्टिसिपेट कर रहा है और इवन दो इस मतलब अ पर्सन उसकी स्टोरी अगर पिक कर ली ग्रुप ने, तो देन कॉमन नरेशन में भी उसी को अगर ग्रुप ने नॉमिनेट कर दिया, फिर अगर उसने कॉमन नरेशन में कबाड़ा कर दिया, तो सर दैट विल मतलब सर इम्पैक्ट पड़ेगा उसके स्क्रीनिंग पे? तो आप अगर कभी एग्जाम में कबाड़ा कर देते हो, फाइनल एग्जाम में आपने हाफ ईयरली तक बहुत अच्छा किया, फाइनल एग्जाम में आपने कुछ गड़बड़ कर दिया, तो आप बताओ उसका इफेक्ट पड़ता है कि नहीं पड़ता है? यस सर, पड़ता है सर। हाँ, तो फिर तो ये क्वेश्चन क्यों आ रहा है आपकी तरफ से, राइट? सो ऑब्वियसली इफ यू डोंट परफॉर्म वेल, थोड़ा सा इफेक्ट तो उसका पड़ेगा, बट ये इट definitely whether you have before that you have done everything very well, maybe that can see you through, okay, but it is not certain, right? आप अपनी कोशिश करो कि हर doing well every time, right? So that should be the aim. Okay, chalo, or anybody else? Sir? Yes. Sir? Bipin, are you there? Yeah. Okay. Sir, my SSB is for NCC entry. What point should I keep in my mind for stage 1 and stage 2? You wait for a while, right? I think 2-3 दिन के अंदर मैं एक I'll put one video on the same channel, right, for NCC special entry. Okay. Sir, I have only 3 days. You have only 3 days. So मैं क्या बता सकता हूँ तुम्हें, बताओ, मतलब तुम्हारा परेशानी क्या है? I don't know what is your performance like. Sir, NCC entry में सर 400-500 रिपोर्टिंग कैंडिडेट्स का होगा सर। दूसरा चीज सर, स्टेज 2 में भी सर थोड़ा एकेडमिक्स पे या फिर उस पे क्या मतलब सर किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और क्या सिनेरियो रहेगा? See, stage 1, obviously you'll have to perform to the best of your ability. Stage 2, the emphasis will be in NCC entry. The emphasis will also be on your knowledge level. It will be on your OIR. It will be on your reasoning, right? So आपका जो intellect है, that will be in focus. ठीक है? समझ में आ गया? Sir. Yes, somebody else was saying, yeah. Yes. सर वो एनसीसी एंट्री के लिए मैं इस साल अपीयर कर सकते हैं सर? You find out the notification, आप चेक करो, अगर आपके पास you got the C certificate already? नो सर। हाँ, तो एनसीसी एंट्री में तभी आप अपेयर कर सकते हो जब आपके पास में एनसीसी का सीनियर डिवीजन C सर्टिफिकेट होता है। और सर एज कितना तक होता है? That you'll have to find out, right? Maybe Anshu can tell you. Anshu, 25 years. Right. Okay, thank you. Okay. Yeah. Okay, I think we have Bipin. Is he there? Bipin, are you there? Okay, fine. I think there is one, a second part of the interview I had with Meghank, right? I think that should be out. I am not sure whether it is out yet already, but second part is there. So please go through that. I think that's also it has a lot of learning value. Okay. And that's it. Anything else? Good afternoon, sir. Yes. Yes, sir. सर तो मैं मेरा परसों 1 मार्च को एसएसबी के लिए जा रहा हूँ सर। Oh, Anmol Seni, how are you? Yes sir. Good sir. तो कैसी तैयारी है? Sir, it is good sir. So anything I can do to help you? No sir, you have done a lot. I have learned a lot from you. So just informing like. Chalo, okay. So wish you all the best, Anmol, right? So have that faith in yourself.
Yes. Chalo, so 4 o'clock, Bipin says that a new video will be out. I mean, that interview with Meghank, part 2, right? Part 1 you have already seen. You have seen with Himanshu also, right? So Meghank ka second part, aap log dekhiye jara, right? 4 o'clock it will be out. Okay. Chalo, and good to see all the newcomers, Ushashi, what that, Chattopadhyay, huh? Yes, sir. Okay. Chalo, wish you all the best and do stay connected and keep posting your comments, right? Post your queries. आपके पास में कुछ आपको जो चाहिए from this channel, please let me know, right? So that we can put out those videos. Chalo, thank you very much. Thank you, sir. Chalo, Jai Thank Hind. you for session, sir. Thank you, sir. Jai Hind, sir. Thank you, sir. Jai Hind. भैया सर गए भैया विपिन भैया क्या हो गया भैया गुस्सा हो गए क्या मेरे से विपिन भैया या भैया अरे भैया सुनो तो रिप्लाई तो करो एक सेकंड अनम्यूट करके ये वीडियो तो प्राइवेट दिखा रहा है अभी भैया मेरे को ही पूछना है कि जो अभी सर ने जो पीडीएफ अभी शेयर करी थी स्क्रीन शेयर करी थी हाँ चले गए सर बताओ एक मिनट रुक जाओ 1 मिनट रुक जाओ 1 मिनट रुक जाएगा 1 मिनट